आज की इस वीडियो में हम क्लासरूम असेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू कैरोल टॉमलिंसन, असेसमेंट इज़ टुडे मीन्स ऑफ मॉडिफाइंग टुमारो इंस्ट्रक्शन। असेसमेंट का मतलब है आज के जो मानी हैं उनको मॉडिफाई करके कल के लिए इंस्ट्रक्शंस देना। इट हैज़ इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक इंतहाई अहम जुज़ है। इट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड दैट इफ़ेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज़ डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय असेसमेंट। Hamidi 2010 developed a framework to answer the why, what, how and when to assess. This is helpful in understanding the true nature of this concept. Why to assess? Teachers have clear goals for instructions and they assess to ensure that these goals have been or being met. If objectives are the destinations, instruction is the path to it, then assessment is a tool to keep the efforts on track and to ensure that the path is right. After the completion of journey, assessment is the indication that destination is head. What to assess, क्या चीज़ जो है वो हमने assess करनी है। टीचर्स कैन नॉट assess वॉट एवर दे themselves like। टीचर्स जो हैं वो सिर्फ वो चीज़ assess नहीं कर सकते जो उन्हें पसंद है। इन क्लासरूम असेसमेंट, एक क्लासरूम असेसमेंट में टीचर्स आर सपोज टू असेस स्टूडेंट्स करंट एबिलिटीज़। टीचर्स को स्टूडेंट्स की, तालिब इल्मों की जो करंट एबिलिटीज़ हैं, जो मौजूदा सहूलियतें हैं इन ए गिवन स्किल और टास्क, उनको असेस किया जाता है किसी भी स्किल के थ्रू या फिर टास्क के थ्रू। द टीचर कैन असेस स्टूडेंट्स नॉलेज। टीचर जो है वो स्टूडेंट नॉलेज असेस कर सकता है, स्किल्स एंड बिहेवियर रिलेटेड टू पर्टिकुलर फील्ड। हाउ टू असेस, कैसे जो है वो, हु टू असेस, किस को असेस करना है। इट मे सीम स्ट्रेंज टू आस्क होम ए टीचर शुड असेस इन दी क्लासरूम। ये एक अजीब दिखाई देता है कि टीचर जो है वो क्लास में किस को असेस करे। बट द इशू इज़ ऑफ ग्रेट कंसर्न, लेकिन ये मसला बहुत कंसर्न। टीचर्स शुड ट्रीट स्टूडेंट्स एज रियल लर्नर्स। टीचर्स को स्टूडेंट्स को समझना चाहिए एक हकीकी लर्नर के तौर पर, नॉट एज कोर्स और यूनिट कवर्स। They should also predict that some students are more active and some are less active. ये भी प्रिडिक्ट किया जाता है कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं और कुछ जो हैं वो लेस एक्टिव होते हैं। मोर और सम आर क्विक, कुछ जो होते हैं वो क्विक होते हैं एट लर्निंग, सीखने में, एंड सम आर स्लो एट इट, और कुछ जो हैं वो स्लो होते हैं। देयरफॉर classroom assessment calls for a prior realistic appraisal of individual teachers are going to assess. How to assess, कैसे assess करना है। Teachers employ different instruments, formal or informal, to assess their students. Brown and Hodgson in 1998 reported that teachers use three sort of assessment method. टीचर जो हैं वो तीन किस्म के असेसमेंट तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हैं। सिलेक्टेड रिस्पांस असेसमेंट, कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस असेसमेंट एंड पर्सनल रिस्पांस असेसमेंट। दे कैन एडजस्ट द असेसमेंट टाइप टू व्हाट दे आर गोइंग टू असेस। वो अपनी असेसमेंट टाइप एडजस्ट कर लेते हैं, उसी के मुताबिक रखते हैं जो वो असेस करना चाह रहे हैं। When to assess, कब असेस करना है। There is a strong agreement of educationists that assessment is interwoven into instruction. Teacher continue to assess the students' learning throughout the purpose of teaching.
They particularly do formal assessment when they are going to make instructional decisions at the formative and summative levels, even if those decisions are small. For example, मिसाल के तौर पर they assess when there is a change in the content, when there is a shift in pedagogy, when the effect of the given materials or curriculum or learning process is examined. How much to assess, किस तरह assess, कितना assess किया जा सकता है. There is no touchstone to weight the degree to which a teacher should assess students, but it does not mean that teachers can evaluate their students to extent that they prefer. It is generally agreed that as students differ in ability, learning styles, interests, and needs, so assessment assessment should be limited to every individual needs, ability, and knowledge. Teachers' careful and wise judgment is this in this regard can prevent teachers from over assessment